जो टॉपिक है ज्योग्राफी के अंदर, इसमें जो मेन कंसर्न्स हैं हमारे, तो वन तो वी शुड नो व्हाट ऑल ओशंस आर देयर, उनकी प्लेसमेंट कैसे है, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, एक ये बेसिक कंसर्न है। उसके बाद ओशियानो ज्योग्राफी के अंदर हमें कुछ सैलिनिटी लेवल मेजरमेंट्स के ऊपर कई बार क्वेश्चन आता है यूपीएससी के अंदर, या सो एक एक करके जो जो इनके कॉन्टेक्स्ट हैं सारे एनसीईआरटी में दे रखे, सो लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन देम। गिव मी अ मोमेंट, आई विल जस्ट ब्रिंग अप द एनसीईआरटी। Visible? NCERT? Yes, sir. So as it is, water को रिसोर्स मान के ये पूरा एक सेक्शन बनाया गया है। अब वाटर के अंदर दो तीन एस्पेक्ट्स हैं। अगर सिर्फ वाटर की बात करें तो पहला साइकिल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की बात होती है वाटर के अंदर। Essentially water cycle, how does it move on the planet Earth? So here, if we look at it, तो हमने कुछ चीजें पढ़ी हैं कि there is evaporation, then that leads to formation of clouds, then those clouds are transported by wind also sometimes, yeah, and then there is precipitation movement that the water holding capacity is no longer there, yeah. So after a while, जब तक वो ना एक थ्रेशोल्ड पॉइंट पे नहीं पहुंच जाता मॉइस्चर कंटेंट, तो उसके बाद फिर फाइनली देयर हैज टू बी प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन के बाद इट विल अगेन run off back into the some kind of lake or an ocean or a river. Again there is evaporation. इसके अलावा there is transpiration also, so plants से जो हमें मिलता है, so that's also a part in the hydrological cycle. Okay, so that's why water is a cyclic resource, that is one. It can be used and reused in any form, चाहे dirty हो गया चाहे कुछ भी है, but चल तो वही पानी रहा है. Now, the hydrological cycle describes the movement of water on, in, and above the earth. So, water cycle has been working for billions of years, and all life on the earth still depends upon it. So, next to air, water is the most important element. इसीलिए water conservation के ऊपर भी हम आज बहुत चिंतित हैं. Especially in Punjab, for example, where most of the underground water will be extinct in another 17 years down the line. Yeah, so that's the situation in Punjab. So the hydrological cycle is the circulation of water within the Earth's hydrosphere in different forms, that is solid, liquid, and gaseous phases. तो जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो ये है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की, कभी भी पेपर में पूछते हैं तो ये डेफिनेशन बतानी. ओके, देन इट आल्सो रेफर्स टू कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ वाटर बिटवीन द ओशंस. ये ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए डेफिनेशन वही है. So between the oceans, the ice caps, the groundwater, the lakes, everywhere, okay, as well as the organisms. So now next is the data. About 71% of the planetary water is found in the oceans. Remaining is held as the fresh water in the glaciers, ice caps, groundwater sources, lakes, soil, moisture, streams, and within life. The general content पानी का इस तरह से divided है. 59% of the water that falls on the land returns to the atmosphere through evaporation from over the oceans as well as other places. The remainder runs off on the surface, infiltrates into the ground, or a part of it becomes glacial. तो अलग अलग तरह से ग्राउंड वाटर का जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है वो चलता रहेगा. ठीक है. Now it is to be noted that renewable water on earth is constant while the demand is increasingly tremendous. पानी तो उतना ही है और उसका रिन्यूअल स्ट्रेंथ भी उतना ही है, धीरे धीरे रिन्यू करेगा. But at the same point of time, we always have growing population. We want to do more agriculture. Even in India today, the irrigation cover is not 100%. No, at many places it is on an average 50%. So because of that, you will need to continuously increase irrigation coverage. And we have water-hungry plants like rice and sugarcane. So जैसे राइस जो है उसको करीब करीब 5000 लीटर पानी चाहिए 1 kg राइस ग्रो करने के लिए. ऐसे ही शुगर केन जो है उसको भी 3500 लीटर्स वाटर चाहिए 1 kg शुगर केन ग्रो करने के. तो इस तरह के प्लांटेशन हमारी नेसेसिटी है, शुगर केन भी और राइस भी. तो इस वजह से भी वाटर की जो डिमांड है वो बढ़ती चली जाएगी. नाउ रिलीफ ऑफ द ओशन फ्लोर.
ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर कि किस तरह की रिलीफ है, और कलर्ड पिक्चर्स आपने उसके अंदर देख ली थी. सो वी हैव कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप एंड डीप सी प्लेन एंड दी ओशियानिक डीप्स. 4 एस्पेक्ट्स में एनसीईआरटी उसको डिवाइड करता है. कॉन्टिनेंटल शेल्फ के अंदर क्या है? So it is the extended margin of the each continent occupied by relatively shallow sea and gulf. तो यहाँ पे एक तरह से आपको ओशन और कॉन्टिनेंट दोनों का एक मिक्सिंग पॉइंट है, ट्रांजिशन पॉइंट है. So it is the shallowest part of the ocean, showing an average gradient of 1 degree or even less. The shelf typically ends at a very steep slope called as the shelf break. एकदम से फिर आपको डेप्थ मिलेगा शेल्फ ब्रेक के ऊपर. The width of the continental shelves vary from the ocean to ocean. The average width of the continental shelf is about 80 किलोमीटर. तो जैसे आप फॉर एग्जांपल इंडिया के कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखते हो तो आपको ऑन एन एवरेज इतना तो मिलना ही चाहिए, ये बोलते हैं. ठीक है, अब एक्सट्रीम्स कैसे हैं देखिए. द शेल्व्स आर ऑलमोस्ट एब्सेंट और वेरी नैरो अलोंग सम मार्जिन्स लाइक कोस्ट ऑफ चिले, वेस्ट कोस्ट ऑफ सुमात्रा. तो ये 2 जगह पे आपको बहुत कम शेल्फ मिलता है. आपको याद है हमने पढ़ा था देयर इज ओशियानिक एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट. सो वहां पे जहां पे सबमर्जेंस होगा, है ना, तो उसकी वजह से एक ट्रेंचेस भी बन सकते हैं, शेल्फ्स भी बन सकते हैं. अलग अलग तरह के फीचर्स हमारे पास क्रिएट हो रहे थे. डू यू रिमेंबर? Yes, So sir. all these features are here also responsible. Same thing is going on. Okay, चलिए आगे देखते हैं. On the contrary, the Siberian shelf in the Arctic is the largest in the world. So ये याद रखना है prelims के लिए fact है. So that is 1500 kilometers in width. The depth of the shelves also varies. It may be as shallow as 330 meter and it may be as deep as 600 meters. So ये भी position to position, shelf to shelf vary करेगा. Average 80 किलोमीटर निकाला है. ठीक है. Now they are covered with variable thickness of sediments brought by rivers, glaciers, wind, and from the land and distributed by waves and currents. So massive sedimentary deposits received over a long time by the continental shelves become the source of fossil fuels. इसीलिए हमारे पास जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ के आसपास फॉसल फ्यूल्स हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया में बॉम्बे हाई है, तो वो भी थोड़ा सा हमारे कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर ही आगे थोड़ा सा मुंबई से बनाया गया है ना. इनसाइड द कोस्ट देयर इज बॉम्बे हाई. तो वहां से ऑयल एंड गैस रिजर्व्स हम पंप आउट कर रहे हैं. ऐसी केजी बेसिन है, कृष्णा गोदावरी बेसिन, सो दैट्स इन बे ऑफ बंगाल. तो उधर भी हम ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं. ठीक है, क्योंकि ये जो सेडिमेंट्स है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे आर settled inside and then they transform. Yeah, so that's what is going on. Now, various kinds of relief features we have already studied. So there is continental shelf, that's the shelf break, slope, and then continental rise. Continental rise पे जाके सारा मटेरियल जो है वो डिपॉजिट हो रहा है. उसके बाद फिर एबिसल प्लेन आ जाता है, फ्लैट, डीप सी ट्रेंचेस, ये सब हम देख चुके. ठीक है, सो ऑल दोज थिंग्स आर डिस्कस्ड हियर अगेन वंस मोर. तो एक दो फैक्ट्स यहाँ पे एक्स्ट्रा एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगे. ठीक है, तो एक रीडिंग यहाँ से आप लेना चाहो तो ले सकते हो. सो दिस इज द रिलीफ फीचर. जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर हमने ऑलरेडी इसको कवर किया था. ठीक है, अभी माइनर और मेजर दो तरह से इन्होंने रिलीफ फीचर्स को डेवलप किया है. तो माइनर रिलीफ फीचर में मिड ओशियानिक रिज है. तो हमने जब ओशन प्लेट बाउंड्रीज की डाइवर्जेंस पड़ी थी तो उस टाइम पे मिड ओशियानिक रिजेस की बात की थी. ठीक है, देन सी माउंट, सबमरीन कैनियंस, गार्ड्स, एटॉल, various kinds of features are there. Okay, now for us to do here is the temperature of ocean water. इसके ऊपर workout करना है. Recording of the session has not yet started. I don't know why. So let me just leave the session once and then restart. Okay, give me a moment.
generally it gives an alert as to if the recording has started or not started, but it's not there yet. Let me see what's the trouble. Otherwise, जो बाकी के बच्चे हैं उनकी trouble हो जाएगी. Okay, let's see. End result पता चलेगा. So temperature of the ocean waters. So बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो टेम्परेचर को भी अब अफेक्ट करेंगे, किस तरह से ओशन वाटर वार्म होता है या नहीं. ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि लैंड के कंपैरिजन में ओशन वाटर वार्म होने में टाइम लगता है. या सो देयरफॉर we have a differential heating of land and sea, and that's why there is the land breeze and sea breeze. That thing we have already studied. Yeah. So now let's see what are the factors which affect the distribution of temperature of the ocean water. So one is latitude. ये तो पक्की बात है कि इक्वेटर के आसपास टेम्परेचर ज्यादा होगा, ट्रॉपिकल एरियाज में ज्यादा होगा, और जैसे जैसे पोलर एरियाज की तरफ चलते जाएंगे सो दैट विल रिड्यूस बिकॉज इंसुलेशन इज लेस. या देन देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर. So the oceans in the northern hemisphere, so there is a lot of land, so they receive more heat due to their contact with larger extent of land than the oceans in the southern hemisphere. So because there is a lot of land in the northern hemisphere, it will get heated, and through convection, that heat will be transferred to the ocean also. Yeah. Then the prevailing wind. So the winds blowing from the land towards the ocean drive warm surface water away from the coast, resulting in the upwelling of the cold water from below. जैसे हमने पढ़ा था वॉकर सेल सर्कुलेशन पेरूवियन करंट के अंदर. It results into a longitudinal variation in temperature. Contrary to this, the onshore winds pick up the warm water near the coast and raise the temperature. तो offshore winds क्या करती हैं? Cold current create करते हैं, आपके पास upwelling of water create करती हैं. और onshore winds क्या करेंगी? उल्टा, warm water आपके पास percolate करेंगे. ठीक है? Then there are ocean currents. So warm ocean currents raise the temperature in cold areas, while the cold ocean currents decrease the temperature in warm areas. For example, the Gulf Stream raises the temperature near the eastern coast of North America and the western coast of Europe, while the Labrador Current, that's the cold current, lowers the temperature near the north coast of America. So that's also what we have covered earlier in currents. तो ये तो हो गया वर्टिकल लेवल पे. अगर देखा जाए एक लैटिट्यूडनल लेवल पे देखा जाए तो टेम्परेचर किस किस तरह से वेरी हो रहा है. ठीक है. तो लैटिट्यूड इज देयर, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर इज देयर नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर. विंड स्पीड इज देयर, ऑनशोर ऑफशोर प्रिवेलिंग विंड्स हैं या नहीं. देन ओशन करंट्स. चार हमारे पास मेजर फैक्टर हो गए. अब ये डिस्ट्रीब्यूशन है कैसे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लेवल पे. लेट्स सी. द टेम्परेचर डेप्थ प्रोफाइल ऑफ द ओशन वाटर शोज how the temperature decreases with increasing depth. Obvious है, जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे ओशन के अंदर तो एट डेप्थ आपकी इंसुलेशन कम होगी. इंसुलेशन कम होने के साथ साथ आपका जो पानी है ठंडा होता चला जाएगा, ऑटोमेटिक है. सो the profile shows the boundary region between the surface water and the ocean and the deep layers. The boundary usually begins around 100 to 400 meters below the sea surface and extends several hundred meters downward. This boundary region from where there is a rapid decrease in temperature is called as thermocline. तो ये याद रखना. ठीक है. अभी ये thermocline का मैप होगा यहाँ पे, ये रहा. तो ये बाउंड्री करीब करीब 100 मीटर से शुरू हो जाएगा और हो सकता है 400 मीटर तक जाए, हो सकता है 1000 मीटर तक जाए. थर्मोक्लाइन के अंदर हो क्या रहा है, ऊपर के करीब 200-400 मीटर जहां तक इंसुलेशन है वहां पे तो टेम्परेचर ठीक ठाक रहता है, लेकिन उसके बाद एकदम से टेम्परेचर गिर रहा है. कितना गिर रहा है? इट्स अबाउट 4 डिग्री सेल्सियस. या then it will not freeze, it will remain somewhere in that range between 4 to 2 degrees Celsius. Yeah, so that's the situation. Thermocline is the area in which there is a rapid decrease in temperature. So let's see. About 90% of the total volume of water is found below the thermocline in the deep ocean. And in this zone, the temperature approaches 0 degrees Celsius. It does not become 0 degrees Celsius. Then it will freeze, no? There is no frozen water at the depth of the ocean. Okay. Now, the temperature structure of the ocean over the middle and low latitudes can be described as 3-layer system from surface to bottom. So
पहली लेयर में क्या है? द फर्स्ट लेयर represents the top layer of the warm oceanic water, and it is about 500 meter thick with the temperature ranging from 20 to 25 degree Celsius. यहाँ पे हम पोलर वाटर्स की बात नहीं कर रहे, हम इक्वेटर पे खड़े होकर बात कर रहे हैं वाले। कहीं आप सोच रहे हो कि सर फिर वहां पे आइस कैप्स कैसे, है ना? So this layer within the tropical region, see, tropical region is present throughout the year, but in the mid latitudes it develops only during the summer. तो जैसे जैसे टेम्परेट में जाओगे तो उधर ये लेयर नहीं, ठीक है? The second layer is called the thermocline. So what happens here is it is about 500 to 1000 meters thick, and the temperature fall here is very high. So 20 से लेके सीधा 4 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुंच जाएगा. Then the third layer is very cold and extends right up to the deep ocean floor, and the temperatures are close to 0 degrees Celsius. And here only one layer of cold water exists, which extends from the surface to the deep ocean floor. तो जैसे जैसे आप नीचे चलते जाओगे तो पानी ठंडा होता चला जाएगा. इसके अलावा अब ये तो डेप्थ की बात होगी, वर्टिकल बात हो गया, लेकिन लैटिट्यूडनली कैसे वेरी कर रहा है? So average temperature of the surface water of the ocean is about 27 degrees Celsius, जिसकी वजह से cyclones बन पाते हैं, ठीक है? And it gradually decreases from the equator towards the pole. The rate of decrease of the temperature with increasing latitude is 0.5 degrees Celsius per latitude. तो 1 डिग्री लैटिट्यूड से करीब करीब आधा डिग्री टेम्परेचर में फॉल आएगा इक्वेटर से पोलवर्ड, ठीक है? So अभी it will be almost 0 degrees Celsius near the poles, and therefore the oceans in the northern hemisphere record relatively higher temperature than in the southern hemisphere. अब इसका भी कारण है, बताइए, अभी पीछे पड़ा था, क्या कारण है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ओशंस का टेम्परेचर ज्यादा क्यों होगा? ज्यादा लैंडफॉर्म की वजह से. Yes, correct. The highest temperature is not recorded at the equator, but slightly north of it, again because of the land. The average annual temperature of northern and southern hemisphere are around 19 and 16 degrees Celsius respectively. This variation is due to unequal distribution of land and water in the northern and southern hemisphere. So it is a well-known fact that the maximum temperature of the oceans is always at their surfaces because they directly receive the heat from the sun, and the heat is transmitted to the lower sections of the ocean through the process of conduction. That means through contact. Now it results into decrease in temperature with increasing depth, but the rate of decrease is not uniform throughout. The temperature falls very rapidly up to the depth of 200 meters, and thereafter the rate of decrease is slowed down, जैसे आपने ये थर्मोक्लाइन के अंदर देखा, ठीक है? So now the salinity. So temperature समझ आ गया. दो तीन चीजें याद रखनी है टेम्परेचर के अंदर. एक तो थर्मोक्लाइन कि करीब 200 मीटर तक एकदम से फॉल करेगा, उसके बाद ऑन एन एवरेज कम हो जाएगा. तो थर्मोक्लाइन की थिकनेस करीब करीब 500 मीटर की हो सकती है. 400 मीटर के बाद कभी भी शुरू हो जाता है, ठीक है? Then main factors क्या है? So there is latitude, unequal distribution of land and water, winds which are prevailing, and the ocean currents. They create the variation in temperature. Then as you move away from the poles, so there is every 1 degree latitude will create a half degree temperature variance. That's the aspect here. Then comes salinity. That means the salt concentration. Okay. So let's see. Salinity is the term used to define the total content of dissolved salts in seawater. It's all kinds of salts. It's not simply sodium chloride. Okay. It is calculated as the amount of salt in grams dissolved in 1000 gram of water. 1 kg sea water के अंदर कितने ग्राम salt है, ठीक है? And it is usually expressed in parts per thousand or ppt. So parts per thousand का मतलब ये है ना 1 gram in 1000. So then it will be 1 ppt. That's the meaning here. So salinity is an important property of seawater. Salinity of 24.7 ppt has been considered as the upper limit to demarcate brackish water. So brackish water मतलब salt water, खारा पानी जिसको आप कहते हैं. So 24.7 ppt अगर salinity रहेगा तो then that is called the brackish water. Now what are the factors which affect the ocean salinity? किस तरह से बढ़ेगा?
अभी सरफेस लेयर के अंदर अगर आप देखेंगे तो उधर सबसे ज्यादा इवेपोरेशन है और सबसे ज्यादा प्रेसिपिटेशन भी है। तो सैलिनिटी ऑफ सरफेस वाटर जो है दैट इज डिटरमिन्ड बाय इवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन। अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बारिश आ रही है, प्रेसिपिटेशन सफिशिएंट है, तो फिर सैलिनिटी कम हो जाएगी। अगर इवेपोरेशन ज्यादा है तो सॉल्ट बढ़ जाएगा, पानी उड़ जाएगा। ठीक है। तो surface salinity is greatly influenced in coastal regions by fresh water flow from rivers and in polar regions by the process of freezing and thawing of ice. तो कोस्टल रीजन्स में नदियों से फ्रेश वाटर आएगा, फ्रेश वाटर जैसे ही मिक्स करेगा पीपीटी कम हो जाएगा, उसका salinity will come down. Similarly in polar regions also, moment there is melting of ice, again the same thing will happen, fresh water is getting added. Then wind also influences the salinity by transferring water to other areas. The ocean currents contribute to salinity variation. The salinity, temperature, and density of the water are interrelated. Hence, any change in temperature or density influences the salinity of an area. कैसे किस तरह से इंटररिलेटेड है, तो ये इन्होंने ज्यादा यहाँ पे डिस्कशन नहीं की, आगे करेंगे। Highest salinity in water bodies are Lake Van in Turkey, Dead Sea, that is again a very high salinity sea. यहाँ पे आप आमतौर पे सिंक नहीं कर सकते। देन ग्रेट सॉल्ट लेक, सो लेक वैन के अंदर सबसे ज्यादा salinity है 330 ppt। ऑन एन एवरेज हम 27 मान के चलते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी कौन कौन से सॉल्ट्स हैं? देयर इज सोडियम क्लोराइड, सल्फेट्स, मैग्नीशियम, मे बी मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, देन वेरियस बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स, ब्रोमिन्स, बोरेट्स, स्ट्रोंशियम, अलग अलग है। सबसे ज्यादा कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है। नाउ the salinity of the normal open ocean ranges between 33 to 37 ppt. In the landlocked Red Sea, it is as high as 41 ppt. क्यों लैंडलॉक्ड में ज्यादा है? क्योंकि वहां पे इवेपोरेशन ज्यादा और मिक्सिंग कम हो रही है इधर उधर से, फ्रेश कोई रिवर वाटर आके उसमें मिल नहीं रहा। देन while in the estuaries and the Arctic, the salinity fluctuates between 0 to 35 ppt. Estuaries में क्या हो रहा है? Fresh water is continuously mixing with the ocean water. That's why it is low. In hot and dry regions where the evaporation is high, salinity sometimes reaches 70 ppt. The salinity variations in the Pacific Ocean is mainly due to its shape and large area extent. It decreases from 35 to 31 on the western part in the northern hemisphere because of the influx of the melted water from the Arctic region. So Labrador current जो है वो लेके आएगा. In the same way, after 15 to 20 degrees south, there is a decrease to 33 ppt. तो पैसिफिक ओशन की जो salinity है वो क्योंकि उसका लार्ज एक्सटेंट है और उसमें फ्रेश वाटर मिक्सिंग है फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, इस वजह से चेंज होता रहेगा। अटलांटिक ओशन एवरेज salinity इज अराउंड 36 ppt, तो ये कंपैरेटिवली सलाइन है पैसिफिक ओशन से। तो हाईएस्ट salinity इज रिकॉर्डेड बिटवीन 15 टू 20 डिग्री latitudes and maximum salinity of 37 ppt is observed between 20 to 30 degree north. Okay, so it gradually decreases towards north. The North Sea, in spite of its location in higher latitudes, records higher salinity due to more saline water brought by North Atlantic drift. Baltic Sea records low salinity due to influx of river waters in large quantity. The Mediterranean Sea records higher salinity due to high evaporation. Mediterranean Sea से enclosed है ना बीच में, तो इस वजह से यहाँ पे evaporation ज्यादा है। ठीक है। So that's the reason why it is having a higher salinity. Then salinity is, however, very low in Black Sea due to enormous freshwater influx by the rivers. So that's how the situation is. The average salinity of the Indian Ocean is about 35 ppt. So the low salinity trend is observed in Bay of Bengal due to influx of rivers Ganga. So on the contrary, in the Arabian Sea, there is higher salinity due to evaporation and low influx of fresh water. So that's the situation in terms of salinity. Vertical distribution कैसा है? Depth के हिसाब से कैसे salt concentration vary करता है? So salinity do change with depth, but the way it changes depends upon the location of the sea. Salinity at the surface increases by loss of water to ice or evaporation. या तो पानी freeze हो जाएगा और salt पीछे छोड़ देगा,
या फिर evaporate हो जाएगा. In both concentration will be increased. और decreased by input of fresh water. Maybe river लेके आ रहा है, maybe बारिश हो रही है. ठीक है? As from the rivers, so salinity at the depth is very much fixed because there is no way that water is lost or the salt is added. जैसे depth बढ़ता जाएगा तो fixed salinity हो जाएगी, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा. There is a marked difference in the salinity between the surface zones and the deep zones of the ocean. The lower salinity water rests above the higher salinity dense water. जैसे जैसे सॉल्ट कंसेंट्रेशन बढ़ता जाएगा, पानी की डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी. तो डेंस वाटर सिंक्स डाउन, लो डेंसिटी वाटर फ्लोट्स ऑन द टॉप. ठीक है, आप सिंपल सा एक्सपेरिमेंट अगर करना चाहें तो पानी में नमक डालना शुरू कीजिए. जो नीचे का पानी है वो टर्बिड हो जाएगा क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है, उसके अंदर सॉल्ट कंसेंट्रेशन ज्यादा है. और ऊपर का पानी क्लियर रहेगा कंपैरेटिवली क्योंकि उसमें सॉल्ट कंसेंट्रेशन कम है और उसमें डेंसिटी भी कम है. तो उस हिसाब से इट विल बी फ्लोटिंग ऑन द टॉप. सो salinity generally increases with depth and there is a distinct zone called as halocline. So the thermocline था, इधर halocline है, where salinity increases sharply. So after a certain depth, it will start increasing. Other factors being constant, increasing salinity of seawater causes this density to increase. And high salinity seawater sinks below the lower salinity water, and this leads to stratification by salinity. तो जैसे जैसे salt concentration बढ़ता जाएगा, तो वो sink करेगा नीचे, वो high density water है, ठीक है? So with depth, the salinity should therefore increase a little. जैसे जैसे salt concentration बढ़ेगा. तो यूपीएससी में तो बड़ा सिंपल एक वन स्टेटमेंट क्वेश्चन बोलेंगे इसके बारे में. ठीक है, अदरवाइज एट अ सर्टेन डेप्थ इट विल बी वेरी मच फिक्स्ड, फिर वहां पे वो चेंज नहीं हो रहा. बट इफ यू टेक द होल कॉलम ऑफ द सी, दैट्स हाउ द सिचुएशन इज. एंड halocline इज अ लाइन वेयर इट विल बी एन अब्रप्ट चेंज इन salinity, it will increase abruptly. So this is the basic physical aspects of water. Okay, now moving on, movement of ocean water. So we know that there are several kinds of movements in the ocean water. First movement is waves. So waves are actually the energy, not the water as such, which moves across the ocean surface. Water particles only travel in small circles as the wave passes. The wind provides the energy to the waves. So wind ऐसे जा रही है, पानी ऐसे घूम ही रहा है सर्कुलर मोशन में. ओके, तो क्रेस्ट एंड ट्रफ उसी सर्कुलर मोशन का एक पार्ट है. Then wind causes the waves to travel in the ocean and their energy is released at the shoreline. So wave is not movement of water. Wave is actually the movement of energy through water. Okay. The motion of the surface water seldom affects the stagnant deep bottom water of the ocean. तो ये तो सिर्फ सरफेस पे ही हो रहा है, नीचे कुछ नहीं है. Then as the wave approaches the beach, it slows down, and this is due to the friction occurring between the dynamic water and the sea floor. And when the depth of the water is less than half the wavelength of the wave breaks. तो essentially ये एक फैक्ट है जो यूपीएससी पूछता है कि वेव ब्रेक कब करती है, टूटती कब. So depth of the water is half the wavelength. ये याद रखना, ठीक है. Then the largest waves are found in the open ocean. The waves continue to grow larger as they move and absorb the energy from the wind. Most of the waves are caused by the wind driving against the water. When a breeze of 2 knots or less blows over calm water, small ripples form and grow as the wind speed increases until white caps appear in the breaking waves. So waves may travel thousands of kilometers before rolling ashore and breaking and dissolving as surf. So a wave's size and shape reveal its origin. Steep waves are fairly young ones and are probably formed by local wind. जो आपको कोस्टलाइन के आसपास कभी steep wave मिलती है तो उसका कारण है. Slow and steady waves originate from far away places, possibly from another hemisphere. The maximum wave height is determined by the strength of the wind, that is how long it blows,
and the area over which it is blowing in a single direction. So waves travel because of the wind push the water body in its course, while gravity pulls the crest of the waves downward. तो इस तरह से gravity भी काम कर रही है और wave wind की भी काम के अंदर आ रही है. The falling water pushes the former trough upward. तो एक बार यहाँ पे पानी गिरेगा तो ये अगले पानी को ऊपर उठाएगा. So that's how the wave motion is going on. Okay. The actual motion of water beneath the wave is circular. It indicates that the things are carried up and forward as the wave approaches and down and back as it passes. If you go to an ocean, you will feel that you are trying to stand at one place. Sometimes you are pushed in forward direction, sometimes it's in the backward direction. And if you see the waves coming on shore, that's how the waves are also acting. Yeah. It comes up, flats against the coastline and then just goes back. Yeah. और जब पानी पीछे को ज्यादा चलना शुरू हो जाए तो आपको समझ लेना चाहिए कि अब जो नेक्स्ट वेव आएगी वो बड़ी आएगी. ठीक है, पहले वो सक करता बहुत ज्यादा. ओके. So the highest and the lowest points of the wave are called crest and trough respectively. Wave height, so it's the vertical distance from the bottom of a trough to the top of the crest and wave. Wave amplitude, so it is the 1/2 of the wave height. Okay. Then wave period, so there's a time interval between the two successive waves. Wave length, horizontal distance between two successive crests. Wave speed, so rate at which the water is moving or the wave is moving through the water. That's in knots. Then wave frequency, so there are a number of waves passing through a given point between a 1 second time interval. So ये सारी waves के साथ जुड़े हुए vocabulary है. Now tide, we know that water is being held to the Earth's surface through gravity, but there is force of gravity in moon and sun as well. So they will also attract the water towards themselves as and when they are positioned appropriately. So let's see what happens. So tide kya hai? So periodic rise and fall of the sea level once or twice a day, mainly due to the attraction of the sun and the moon, is called a tide. So movement of water caused by meteorological effects are called surges. Meteorological effects kya hai? Atmospheric pressure, wind, something like that. So that's surge. तो कई बार सुनामी की वजह से भी सर्ज आती है, जैसे अर्थक्वेक की वजह से सर्ज आ सकती है. So surge are not like regular tide. So surge wave के जैसा ही है. ठीक है. The study of tides is very complex, spatially and temporally, as it has great variation in frequency, magnitude and height. हमें तो दो तीन चीजें पढ़नी, वो क्या है? The moon's gravitational pull to a great extent and to a lesser extent the sun's gravitational pull are the major causes for the occurrence of tides. Another factor is the centrifugal force. So since the earth is rotating about its own axis, so the water is thrown out. जैसे यहाँ पे centrifugal force यहाँ पे चल रहा है. ठीक है. So now, which is the force that acts to counterbalance the gravity. Together, the gravitational pull and the centrifugal force are responsible for creating two major tidal bulge on the earth. एक तो tidal bulge बन रहा है इधर मून की तरफ. ठीक है. So that is one. Then the second is on the other side, and there is the centrifugal force which is trying to create the overall situation. So there's the gravitational force and the centrifugal force. दोनों काम कर रहे हैं. ठीक है. So that leads to tidal bulge. इस तरह से इक्वेटर के ऊपर आपको ज्यादा bulge नजर आएगा. On the side of the earth facing the moon, a tidal bulge occurs, while on the opposite side, through the gravitational force of the moon is lesser as it is farther away. The centrifugal force causes the tidal bulge on the other side. इस तरफ तो moon है तो gravitation की वजह से attract हो रहा है tidal bulge, और इस तरफ centrifugal force से create होता है. तो ultimate result क्या है ये? ठीक है. The tide generating force is the difference between these two factors. That is the gravitational attraction of the moon and the centrifugal force. On the surface of the earth nearest the moon, pull or the attractive force of the moon is greater than the centrifugal force. So
there is a net force causing the bulge towards the moon, and on the opposite side, centrifugal force will be dominant. So इस वजह से एक combined effect इसका क्या होता है? Plus one. Yeah. So on the surface of the Earth, the horizontal tide generating forces are more important than the vertical forces generating the tidal bulge. तो हमें तो यही नजर आएगा, horizontal tide. The tidal bulge on wide continental shelves have greater height. कहाँ पे आपको टाइड की हाइट ज्यादा मिलेगी? जहां पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ ज्यादा है. When the tidal bulges hit the mid-oceanic islands, they become low. The shape of the bays and estuaries along a coastline can also magnify the intensity of tides. Funnel-shaped bays greatly change tidal magnitude. When the tide is channeled between the islands or into the bays or estuaries, it is called tidal current. तो tide ऊपर उठ के फिर estuary के अंदर जब collapse करेगा पानी, तो उसको tidal current बोलते हैं. ठीक है. Now, types of tides. So tides vary in their frequency. That means एक दिन में कितना, direction and movement from place to place, and also from time to time. So tides may be grouped into various types based upon the frequency of their occurrence in one day, based on their height. So tides based on frequency. So एक दिन में कितना हो रहा है? One is semi-diurnal tide. So this is the most common. So featuring two high tides and two low tides each day. The successive high or low tides are approximately of the same height. तो जब आप कभी बीच पे जाएंगे तो हाई टाइड के टाइम पे वो वार्न करके आपको बाहर निकाल लेंगे, याद आएगी. ठीक है. Mostly towards night you will have high tides. Then diurnal tide. So there is only one high tide and one low tide each day. Then it is called diurnal. The successive high or low are approximately of the same height here also. Then there is mixed tide. So tides having variation in height are known as mixed tides. So they're generally occurring in the west coast of North America and on many islands of the Pacific Ocean. यहाँ पे exactly इनकी continental shelf की वजह से ऐसा होता है. Then tide based upon sun, moon and earth position. एक तो frequency देख लिया, अभी ये second category. Frequency के हिसाब से ये देख रहे थे दिन में कितनी बार tide हो. ठीक है. Now let's see. The height of the rising water varies appreciably depending upon the position of the sun and moon with respect to earth. Spring tides and neap tides come under this category. तो यहाँ पे हम high tide, low tide नहीं बोलते, spring और neap बोलते हैं geography के अंदर. ठीक है. तो spring tide किसको बोलते हैं? So the position of both sun and moon in relation to the earth has direct bearing. So when the sun, moon and the earth are in straight line, the height of tide will be higher. क्योंकि एक दूसरे को जो gravitational force है reinforce करेगा. So this is called a spring tide and they occur twice a month, once on a full moon period and the other on the new moon period. दो बार होगी महीने में. Then there is neap tide. So normally there is a 7-day interval between spring tide and a neap tide. At this time the sun and moon are at right angles to each other and the forces of the sun and moon try to counteract with one another. So gravitational force अभी एक दूसरे के against काम कर रहा है. The moon's attraction, though more than twice as strong as sun's, is diminished by the counteracting force of the sun's gravitational pull. Moon का tide attraction कितना है? 2 गुना ज्यादा है, पर फिर भी diminish तो हो गई. Once in a month, when the moon's orbit is closest to the earth, that is perigee, unusually high and low tides occur because gravitational effect of the moon will be very strong. During this time, the tidal range is greater than normal. मतलब जो height है वो बढ़ जाएगा. 2 weeks later, when the moon is farthest from the earth, that is apogee position, so we भी elliptical path के through जाता है ना, तो इस वजह से it is closest and farthest. जैसे earth is going around the sun in an elliptical path, here also it is the same. So the moon's gravitational force is limited and the tidal range are less than the average. So perigee के time पे higher tidal range है, high tides are higher, low tides are lower. Apogee के time पे उल्टा, high tides are lower, low tides are a bit normal, not that low. Okay. Then when the earth is closest to the sun, that's the perihelion position on 3rd January each year, the tidal range is also much greater with unusually high and unusually low tides.
So again, ulta aphelion position, 4th of July, so tidal range is much less than average. तो सन और मून दोनों की पोजीशन के हिसाब से हमारे पास एस्पेक्ट्स हैं. सन की पेरिजी और एपोजी पोजीशन है, और अर्थ और सन के बीच में हमारे पास एक पेरिहिलियन और एपिहिलियन की पोजीशन है. ये देखना है. The time between the high tide and the low tide, when the water level is falling, is called the ebb. The time between the low tide and the high tide, when the water level is rising, it is called the flow or flood. So ebb and flow, ये याद रखना दोनों टर्म. वोकैबुलरी बेसिकली जितनी यहाँ एनसीईआरटी में दी है, इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए यूपीएससी के अंदर. Then what is the importance of these tides? So tidal flow is of great importance for navigation. कुछ एक पर्टिकुलर हाई टाइड के टाइम पे ही आप शिप्स को एंटर करवा पाओगे पोर्ट्स के अंदर. जो बड़े शिप्स हैं, छोटे शिप्स तो कभी भी आ जा सकते हैं. So tidal heights are very important, especially for harbors near the rivers and within estuaries having shallow bars at the entrance, which prevent the ships and boats from entering into the harbor. तो जब हाई टाइड होगा तो they will be able to enter. पानी ऊपर उठ जाएगा. The tides are also helpful in distilling the sediments and in removing the polluted water from the river estuaries. So they are used to generate electrical power in Canada, Russia, China, many places. So that's called tidal energy. Okay. So in India also, we have a tidal project in Sundarbans, West Bengal, already there. Then comes the ocean currents. Tide samajh aa gaya? You understood the factors in tide? Yes, Let's come to the ocean currents. So ocean currents, so here it's like a river flow in the ocean. इस तरह से ocean current को बोलते हैं, क्योंकि wind के साथ साथ move कर रहा है. So they represent a regular volume of water in a definite path and direction. जैसे river का एक definite path and direction है, वैसे ही चल रहा है. Okay. So the two type of forces, namely primary forces that initiate the movement of water and secondary forces that influence the current to flow. प्राइमरी फोर्सेस क्या है ओशन करंट के पीछे? पहला है हीटिंग बाय सोलर एनर्जी, विंड, ग्रेविटी एंड कोरियोलिस फोर्स. नाउ हीटिंग बाय सोलर एनर्जी causes the water to expand. That is why near the equator ocean water is about 8 centimeter higher in level than in the mid latitudes. This causes a very slight gradient and the water tends to flow down the slope. तो इक्वेटर से जो टेम्परेट एरिया की तरफ एक ग्रेडियंट बन जाएगा, तो पानी उस हायर से लोअर स्लोप की तरफ जाता है. देन विंड ब्लोइंग ऑन द सरफेस ओशन पुशेस द वाटर टू मूव. अब इसी वाटर को जो स्लोप से जा रहा है, विंड से हेल्प मिलेगी. फ्रिक्शन बिटवीन द विंड एंड द वाटर सरफेस अफेक्ट्स द मूवमेंट ऑफ द वाटर बॉडी इन इट्स कोर्स, जैसे हमने वेव्स देखी अभी. Gravity tends to pull the water down to pile and create a gradient variation. The Coriolis force intervenes and causes the water to move to the right in the northern hemisphere and left in the southern hemisphere. जैसे wind को affect करती है Coriolis force, वैसे ही water को भी करेगी. These large accumulations of water and the flow around them are called as gyre. तो जो पानी इस तरह से घूम घूम के चलता है ओशन के अंदर, उसको gyre बोलते हैं, ocean gyres. Then they produce large circular currents in all the ocean basins. So what are the characteristics? So currents are referred to by their drift. Usually the currents are strongest near the surface and maintain speed over 5 knots. So at depth, the currents are generally slow with the speed less than 0.5 knots. ऊपर का surface जो है ना 400-500 मीटर, उधर movement है, नीचे कुछ खास नहीं. So we refer to the speed of a current as its drift, and it is measured in the terms of knots. The strength of the current refers to the speed of the current. A fast current is considered strong, and a current is usually strongest at the surface and decreases in strength with the depth. Most currents have a speed less than or equal to 5 knots. So that's how strong they can be. If you think of 5 knots, how many kilometer per hour is knot? So knot से kilometer per hour कैसे calculate करते हैं? हाँ जी.
So 1 knot is about 1.8 kilometer per hour or 1.85 kilometer per hour. Imagine 5 knot कितना हो जाएगा? Somewhere near 9.2 kilometer per hour. So that's the speed with which you might see कि कोई cyclist जा रहा है. ठीक है, कोई साइकिल चला के जा रहा है आम नॉर्मल बंदा, तो वो करीब 9 किलोमीटर पर आवर 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाएगा. ओके, so that's that. Now you have the understanding. So differences in water density affect the vertical mobility of the ocean current. ये हमें पता है कि जैसे जो डेंस होता जाएगा पानी वो सिंक करेगा और जिसकी डेंसिटी कम है वो राइज करेगा. So denser water tends to sink while relatively lighter water tends to rise. Cold water of the ocean occurs when water ocean currents occur when the cold water at the pole sinks and slowly move towards the equator. तो वहां पे अब क्या है ना, दो चीजें हैं. वार्म वाटर जो है, अब उसका भी देखिए, कोल्ड वाटर इज डेंसर देन दी वार्म वाटर. तो जैसे जैसे कोल्ड वाटर डेंस जो वाटर है वो सिंक करता जाएगा, इक्वेटर के पास जाके रीअपियर करेगा वार्म होने के बाद. दैट्स व्हाई वार्म वाटर करंट्स ट्रैवल आउट from the equator along the surface, flowing towards the poles to replace the sinking cold water. तो एक पूरी एक कन्वेयर बेल्ट जैसी बन जाती है. इस कन्वेयर बेल्ट को देखना जरूरी है. एक मिनट, शो यू. यस, दिस वन. तो हमारे पास इस तरह से कन्वेयर बेल्ट बनी हुई है. ठीक है, तो ऊपर जो सरफेस के अंदर वार्म वाटर की मूवमेंट चल रही है और डीप वाटर यहाँ पे पोल्स के जाके सिंक हो जाएगा और ये फिर इस तरह से चलता जाएगा और फिर राइज करेगा. ठीक है, दैट्स हाउ देयर इज अ कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ कोल्ड एंड वार्म वाटर. ठीक है, थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन बोलते हैं इसको. The ocean currents also flow thousands of meters below the surface. These deep ocean currents are driven by differences in water density, which is controlled by temperature and salinity. That's why it's called thermohaline circulation. Okay? So the thermohaline circulation is sometimes also called as the ocean conveyor belt or the Great Ocean Conveyor Belt. So the ocean bottom relief greatly influences the thermohaline circulation. अगर कहीं पे पहाड़ है तो फिर उस हिसाब से थोड़ा सा वेरी तो हो गई. ठीक है, so this is the great conveyor belt or thermohaline circulation. चलिए आगे बढ़ते. Now type of ocean currents. So the ocean currents may be classified based upon their depth as surface currents and deep currents. So surface currents constitute about 10% of all the water in the ocean, and these waters are upper 400 meter of the ocean. Deep water currents make up 90% of the ocean water, obviously. तो ऊपर का 400 मीटर ही ले रहे हैं. And these waters move around the ocean basins due to variations in the density and gravity. Deep water sink into the deep ocean basins at high latitudes, that means towards the pole, where the temperatures are cold enough to cause the density to increase. The ocean currents can also be classified based upon their temperature, so that is cold and warm. आमतौर पे cold currents कहाँ से originate कर रहे हैं? Lower latitudes या polar area से. Warm current कहाँ से आएंगे? Mid latitudes या equatorial area से. ठीक है. Then major ocean currents हमारे पास हैं कौन से? तो ये. So one is the equatorial current, northern and southern. जैसे जैसे इक्वेटर के जिस तरफ भी देखोगे. Then there is Gulf Stream and so on, but it's better if you look at them on a colored image. आपके atlas, अगर आप स्कूल atlas यूज करेंगे ऑक्सफोर्ड वाला, तो उसके अंदर भी ये आपको ओशन करंट्स देखने को मिल जाएंगे, वेरी क्लियरली डिपिक्टेड. एंड हियर यहाँ पे एक मेजर एस्पेक्ट है. दिस इज द कोल्ड करंट्स एंड दिस इज द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो हमारे पास जा रही थी.
अब ये यहाँ पे एक ओशन गायर क्रिएट होता है इन द पैसिफिक ओशन एट दिस पर्टिकुलर प्लेस, बिकॉज दोनों सब तरफ से इस तरह से मूवमेंट है, और इसके बीच में ये वाला जो पोर्शन है ना, इधर सब कुछ इकट्ठा होता रहेगा, और यहाँ पे एक पर्टिकुलर वेजिटेशन ग्रो करते हैं, उसको बोलते हैं सार्गासो सी, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ करंट फॉर्मेशन। ओके, सो ब्लू ग्रीन एल्गे वहां पे क्रिएट हो जाता है। ओके, सो दिस इज द सिचुएशन। एक बार इनको सबको पढ़ लेना है। जो डॉटेड हैं वो कोल्ड करंट्स हैं। फॉर एग्जांपल वी स्टडीड पहले भी, देयर इज दिस हम्बोल्ट करंट और पेरूवियन करंट, देन देयर इज बेनेगुएला, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। जो पोल से ओरिजिनेट कर रहा है बेसिकली वो कोल्ड है, ठीक है। ऊपर से लैब्राडोर करंट इज देयर, ओयाशियो इज देयर, एंड कैलिफोर्निया करंट इज देयर, कैनेरीज करंट इज देयर। सो ऑल ऑफ देम आर कोल्ड करंट्स, ठीक है। बाकी सब वार्म करंट है। वार्म करंट में सबसे इंपॉर्टेंट है गल्फ स्ट्रीम और ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो ऊपर को निकल जाता है। इसी की वजह से यहाँ पे आइस फ्री पोर्ट्स मिलते हैं जिनके थ्रू रशिया इज एबल टू डू सम सी ट्रेड, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर इट टू ट्रेड। इट सीम्स लैंडलॉक्ड एंड दीज पोर्ट्स रिमेन फ्रोजन, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का उतना इफेक्ट नहीं आ पाता, ठीक है। इसी वजह से तो पूरा वो ब्लैक सी में एक्सेस चाहते हैं और ये सब लड़ाई जो है वो यहाँ पे चल रही है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी। इसके अलावा इसमें इफेक्ट्स देख लेते हैं। तो ocean currents have number of direct and indirect effects on the human activities. West coast of the continents in the tropical and the subtropical latitudes are bordered by cool waters. तो वेस्ट कोस्ट के अंदर कोल्ड ओशन करंट्स होने की वजह से हमने पढ़ा था कि दे हैव अ डेसिकेटिंग इफेक्ट अपॉन द atmosphere and there is creation of deserts. Yeah. So their average temperatures are relatively low with a narrow diurnal or annual range, and there is fog, but generally the areas are arid. So west coast of the continents in the mid and higher latitudes are bordered by warm water, which cause distinct marine climate, and they are characterized by cool summers and relatively mild winters with a narrow annual range of temperatures. Warm currents flow parallel to the east coast of the continents in tropical and subtropical latitudes. This results in warm rainy climate. तो जहां पे तो वार्म करंट है उधर रेनी क्लाइमेट रहेगा, जहां पे कोल्ड करंट है ड्राई क्लाइमेट रहेगा। इस तरह से याद रखें। और जहां पे ड्राई क्लाइमेट रहेगा उसकी वजह से क्या होगा, डेजर्टिफिकेशन। नाउ the mixing of warm and cold currents help replenish the oxygen and favor the growth of plankton, which is the primary food for fish population. So that's why न्यूफाउंडलैंड हमने पढ़ा था कल की क्लास में, वहां पे फिशिंग ग्राउंड्स बहुत अच्छे बनेंगे, ठीक है। देन दैट्स दैट फॉर द ज्योग्राफी सेक्शन। अब इसके बाद जो ये है ये एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी के सेक्शंस हैं, so we'll be studying them when we study environment and biodiversity from different book, not from these notes. Okay, so we complete the geography today. Tomorrow we'll be starting with your next aspect. So let's start with economics, +1 +2. Yes, sir. श्रुति, आपने पढ़ा है इंडियन इकोनॉमी एनसीईआरटी? सर काफी टाइम हो गया, पहले पढ़ा था। चलिए ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी एनसीईआरटी शुरू करते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट, देन विल गो टू हिस्ट्री एंड देन वन बाय वन दैट्स हाउ द एनसीईआरटीज हैव टू बी फिनिश्ड। एक बार इनका बेसिक अगर अंडरस्टैंडिंग हाथ में आ जाए तो बाकी चीजें फिर करनी बहुत आसान हो जाती है, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, ये 4 एनसीईआरटीज हैं जो हमको ढंग से करना है। चलिए ठीक है, सो टुमारो विल बी स्टार्टिंग विद द इंडियन इकोनॉमी एनसीईआरटी +1। ओके, तो इंडियन इकोनॉमी में दोनों पढ़नी है, +1 की भी पढ़नी है, +2 की भी पढ़नी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी करना है। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू, हैव अ गुड डे, थैंक यू सी यू सर। टुमारो, थैंक यू। Thank you, sir.